नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित व्हाट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ तार नोट्स मैं आप शेयर करी। आ पूर्व मुझे सहित ह्यूमन राइट्स थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द बिल ऑफ राइट्स ओके रेफ्यूजी लॉ ये सब आगु ऑलरेडी वीडियो बन सारी जो देखी ना प्लीज चेक कर देखिपारे। आ वीडियो आगे मुझे कहबी आपने किपरि नोट्स टी डाउनलोड करेंगे कि आम वेबसाइट अच्छी eSikhya.in आप देखिपारे। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ माने कौन? तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच सीक्स टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन। ओके तो आमर जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट होची जेपर कि काले युद्ध वार न हुए, जदि वार हुए जदि सपोज न्यूक्लियर जदि वार हो जाए तो समस्त विपद पड़ जाए तो यह सब ट्रिटी होता है जे आम किपर सबको एवॉइड करिया। ओके लिमिट लगेदेवा सब आमर जो अस्त्र शस्त्र उपरे। It protects person who are no longer participating in the hostilities. It also restricts the means and methods of warfare. आमर जो warfare होची ताकू कि आम किपर एवॉइड करिया। ओके ताकू कि रेस्ट्रिक्ट लगेया। In international humanitarian law is also known as the law of war and law of armed conflict. International humanitarian law is a part of international law. International law is the body of rules that governing relations between states. आमर जो states कौन रिलेशन रहिबो संपर्क रहिबो। ओके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ applies to armed conflict. It does not regulate whether by its international law set in out in the United Nations character. International humanitarian law is rooted in the rules of ancient civilization and religions. Universal codification of international humanitarian law began in the 19th century. Okay 19th century आछि। States have agreed to series of practical rules based on the bitter experiments of modern warfare. Those rules strike a careful balance between humanitarian concerns and मिलिटारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो जहाँद्वारा कौन है ना समस्त कि स्ट्राइक लगे जे आम कि बैलेंस मतलब सब आम जो मोर कौन रही मिलिटारी रिक्वायरमेंट रही स्टेट को ताको मेंटेन करिया बैलेंस रखिया। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ फ्रॉम टुडे ए यूनिवर्सल बॉडी ऑफ लॉ गोटे बर्तमान समय कौन ये जो लॉ आम यूनिवर्सल आस्पेक्ट होती सब जानते गोटे अंश गोटे। ओके तार द टू मेन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर ट्रिटीज एंड customary international law. Okay I'm कहबी treaties are agreements between states and those states that ratify a treaty are bound by terms. Customary international law कौन ना customary international law consists of rules derived from the consistent practice of state based on a belief that the law requires them to act the way. However such rules are binding on both state and non-state armed groups. Okay, the International Committee of the Red Cross published a study of and created a database on customary international humanitarian law. तो रेड क्रॉस कौन करछि ना द इंटरनेशनल कमिटी जहाँकि हम रेड क्रॉस आप जानते जब आप रेड क्रॉस सेपरेट वीडियो चाहती ताहले कमेंट जनातु आम सब डिस्कसन करवा। पब्लिश्ड ए स्टडी एंड क्रिएटेड ए डाटाबेस ऑन कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ओके कस्टमरी निज हिसाब सजा आम लॉ रे कौन कौन रखा। ओके ए मेजर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज कंटेन इन द 4 जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 मन रखते 1 मार्क आसपारे। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड has agreed to be bound by them. The convention have been developed and supplemented by further agreement that is the additional protocol of 1977. It was related to the protocol of victims of armed conflict. Some agreements also prohibit the use of certain weapons and military tactics and protect certain categories of people and goods. Mostly, many provisions of the international humanitarian law are now as customary law, that is the general rules by which all member states are bound to obey. मैंने समझते मैंने बात थी। ओके तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो। जो मैंने कि नोट्स चाहती डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि आ मो वेबसाइट eSikhya.in आप सर्च कर देखिपारे कि आप सिंपली eSikhya
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଲ eSikhya ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ +3ର ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରଚେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।